Hello and welcome to the Clap Possible YouTube channel, and let's look at the important articles for today, which is the 3rd of February 2024. So let's begin with the very first one. Of course, this is something that we've already done, but now it has been completely formalized. The thing that has happened is, of course, Hemant Soren, who was the erstwhile CM of Jharkhand, he was arrested by the Enforcement Directorate, and we took up what the Enforcement Directorate does and who's heading it, and all of that was done. In fact, we had also spoken about the likely successor of Hemant Soren, and well, that has been formalized today. So Champai Soren has become the 12th Chief Minister of Jharkhand. A couple of other things that we had done before, but there's no harm in repeating it again. So, of course, the name of the governor, that is C.P. Radhakrishnan. The CM now is Champai Soren. The capital of Jharkhand is Ranchi. It would be interesting to know that in the year 2000, the state Jharkhand was carved out of the state called Bihar. In fact, in the same year, in the year 2000, there were 3 new states that were made. So Jharkhand was carved out of Bihar, right? Uttarakhand was carved out of Uttar Pradesh, and Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh. All the 3 in the same year. So anyway, that's that. Let's go on to the next one. Now, this is to do with the recommendations of the Law Commission. Now, what are the recommendations? से पहले हम करते हैं Law Commission होता क्या है? So, if we can see this on the screen, Law Commission firstly is an executive body. अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमारे आंसर्स में या हमारे MCQs में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी अगर टर्म लिखा है, that is also correct because there's no act made for it. There is no article in the constitution for it. It has been made due to a decision of the Ministry of Law and Justice. It works under the Ministry of Law and Justice, right? And कितनी देर तक ये काम करते हैं? So the tenure is 3 years. Of course, it can be extended also if at all there is a requirement. Now, if we talk about when was the Law Commission made for the very first time, so this was during the colonial times. So because of the Charter Act of 1833, it was first established in the year 1834. And the very first chairman of the Law Commission in 1834 was Lord Macaulay. In fact, Lord Macaulay was the first law member of the Viceroy's Executive Council also at that time. Right. Apart from that, if we are asked, who was the first chairman of the first Law Commission of India, right? So that was Mr. M.C. Setalvad. In fact, fun fact, Mr. M.C. Setalvad was also the first Attorney General of India. अगर हम आज के डेट के लॉ कमीशन की बात करें तो this is the 22nd Law Commission and the chairman of the same is Justice Rituraj Avasthi. Now that we know what is the Law Commission, let's try to read क्या आ रहा है अभी न्यूज़पेपर में, right? So the Law Commission panel suggests retaining the criminal defamation provision. So now criminal defamation in the sense जानबूझ के maliciously किसी की reputation को खराब करना, right? Saying something which is defamatory, which is injuring the reputation of another person in front of a third person. मतलब ये published होनी चाहिए. Published का मतलब ये नहीं कि magazine में होनी चाहिए. मतलब किसी तीसरे पार्टी के सामने किसी एक इंसान की reputation को खराब करना intentionally, ताकि उस इंसान को कोई specific loss हो या आपका कोई gain हो जो unlawful gain है, right? तो ऐसे टाइप की चीज को हमने क्या बोल दिया? Criminal defamation. तो मुद्दा ये था, the matter was this in front of the 22nd Law Commission, that should this even happen. Now, why was this even a debate is because of the fact that, there is a very slippery slope between an opinion, a fair comment, and then a defamatory statement. But what the Law Commission has basically suggested under the chairmanship of Justice Rituraj Avasthi is that right to reputation also flows from Article 21. मतलब मेरी reputation का हक, right,
टिल द टाइम मैंने जेन्युइनली कुछ गलत काम ना किया हो, तो तब तक ये मेरा हक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, एंड दिस इज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21. एंड सो देयर सजेशन इज कि क्रिमिनल डिफेमेशन टाइप की ये चीज को रखना चाहिए. यू शुड नॉट डू अवे विद इट. So we will keep reading about, whether this happens or not, because much like many other commissions, the recommendations are non-binding in nature. In fact, the recommendations of only the Election Commission of India is binding, right? That too under certain circumstances, जब हमें MPs को निकालना होता है under the provisions of, the Constitution or the Representation of People's Act 1951. 10 शेड्यूल को हटा के बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर जब प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को, तो उसको बाइंडिंग एडवाइस लेनी पड़ती है ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू कीप इट, दे वांट टू लिसन टू देम और दे डोंट. Now, the next one is something where, we are talking about, this is a mixture of culture, and we are also sort of giving a little bit of recognition to this one union, जिसको हमने welcome किया हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर. प्रेसिडेंसी किस चीज़ की थी पिछले साल में? I mean, there was also the SCO, but I'm talking about G20. और हम सब ने पढ़ा है that in the G20 summit that was held in the month of September in 2023, it was our initiative that led to the African Union becoming a part of this group of nations, right? तो हम कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको हमारे कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. So what has actually happened right now is that there is this international craft fair that is going on, right? So this is which edition? This is the 37th edition. सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर कहाँ पे हो रहा है? फरीदाबाद में हो रहा है, which is the partner nation. The partner nation here is Tanzania. So you have to keep that in mind. अगर पूछा जाए पार्टनर स्टेट तो दैट इज गुजरात. कल्चरल पार्टनर इज नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. More than this, this is important, this is very, very important, right? And the edition is also very, very important. So if we talk a little bit about the African Union, जैसे कि कल हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी it is a union of different countries, right? And the chairperson is Azali Assoumani. So अभी very recently कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अफ्रीकन यूनियन में से अपना नाम हटाने की बात की है. हमने ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी किया है, तो आपने वो जाके पढ़ना है, एंड देन मे बी यू कैन वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. And when was this particular African Union made? So it was made in the year 2002. And it was initially called the Organization of African Unity, and thereafter it came to be known as the African Union. Of course, there's a lot more trivia with respect to the African Union. Karenge kabhi aur. But as of now, the 37th edition of this particular, International Crafts Fair is very, very important for us. So let's go ahead. The next one is to do with this huge honor called the Bharat Ratna. तो क्या है न्यूज़ में दैट लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलने वाला है, विच इज़ द भारत रत्न. सो ऑफकोर्स हमारे लिए ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट व्हेन वाज दिस अवार्ड मेड, अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिविया विद रिस्पेक्ट टू दिस अवार्ड, सो वी कैन सॉर्ट ऑफ रीड इट. सो दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हु प्रेजेंट्स इट. सो इट इज प्रेजेंटेड बाय the president, right? When was it established for the very first time? So it was established in the year 1954. और 1954 में सबसे पहली बार ये किसको मिला? तो अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो सी राजगोपालाचारी was the last governor general of independent India. राइट आप सबने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब हमारी
parliament ki inauguration, the new parliament building was inaugurated, there was this entire Sengol ceremony that took place, right? And it was very much in news. So another kind of trivia that you can keep in mind is that kiska idea tha ye Sengol ceremony ka sabse pehli baar when the power shifted to the Indian Republic, to Jawaharlal Nehru. तो उस समय पे ये चीज किसने सजेस्ट की थी? It was suggested by Mr. C. Rajgopalachari. Now we talk about S. Radhakrishnan. So of course, S. Radhakrishnan was the first vice president of our country. In fact, he held the post for 2 consecutive terms. So that is also something that you should ideally know about. C.V. Raman was the first Indian to get a Nobel Prize for physics. And so these are the 3 people who were awarded the Bharat Ratna for the very first time in the year 1954. इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2024 में we have read about it, Republic Day के आगे, around we had read this, and it was also a part of the headlines of the day that we keep posting on our social media platforms कि कोई बच्चा अगर कभी कोई newspaper ना पढ़े, although I would never say that anything can substitute reading the newspaper, but in case we are busy and whatever is happening, so we can always look at those headlines, at least have a basic idea as to what is happening around us. So we had already mentioned that there. So in the year 2024, the former CM of Bihar, Karpuri Thakur, was presented, of course, in this particular year only. He was given the Bharat Ratna posthumously. अगर इसके अलावा हम बात करें तो एक नेचुरलाइज सिटीजन को भी ये भारत रत्न मिला है, the only one to get it. अब नेचुरलाइज सिटीजन का क्या मतलब? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर there are 5 ways to gain citizenship. जैसे mostly people, at least if I talk about myself, I'm a citizen by birth. There are people who are citizens by descent, by registration, and then there is something known as naturalization. तो naturalization के concept के द्वारा जिसको citizenship मिली है उनमें से केवल एक इंसान को भारत रत्न मिला है, and that person was none other than Mother Teresa. Apart from that, who has it been awarded to who's a non-Indian, who's not an Indian? So Abdul Ghaffar Khan as well as Nelson Mandela. तो ये कुछ trivia हो गया इस particular चीज को लेके. वैसे भी awards become very important for our CLAT, but definitely for AILET, so they love asking these questions, right? In fact, for other law entrance examinations also. Let's go ahead. The next one is, now this is something that we were anticipating. This is something that the President of United States had already mentioned. So you see, we had read about a fact that there was a drone strike that killed 3 US troops in Jordan last weekend, after which the President of the United States of America, Joe Biden, had basically said that we are going to take an action, and so they did. Right, what was that? So basically they hit hard at the militias in Iraq and Syria. Air assault हुआ, right? बहुत सारे drones को use करके, और on sites in Iraq and Syria used by Iran-backed militia, right? And also the Iranian Revolutionary Guard. So that is also something that you can keep in mind. अगर और escalate हुई, नहीं होनी चाहिए, लेकिन और ज़्यादा escalate हुई तो इसको हम बार-बार newspaper में पढ़ेंगे. How do you ascertain that this is important but this isn't? जो चीज़ें recurring होती है newspaper में वो बहुत ज़्यादा important हो जाती हैं. Now let's go ahead. The next one is a very important appointment. Now this particular appointment, firstly we'll know the name of the person. So Vice Admiral Lochan Singh Pathania. Vice Admiral Lochan Singh Pathania. He has assumed charge as a chief hydrographer to the government of India. अब लोचन सिंह पठानिया का नाम हमें लर्न करना है. वाइस एडमिरल, लाइक वी शुड ऑलवेज कीप द रैंक, राइट? एंड बट what is a hydrographer? So firstly, let's understand that hydrography is a branch of applied science. Applied science है ये एक तरीके की, जो कि क्या करती है? Physical features of ocean, seas, coastal areas, lakes, rivers, और उनमें क्या क्या बदलाव आ रहा है, इन सब की पढ़ाई को इन कहते हैं hydrography. So hydrography is a branch of applied science which deals with the measurement and the description of physical features of ocean, seas, and how they are changing.
अब ये हाइड्रोग्राफी हो गई। अब ये वाली चीज की ट्रेनिंग कौन देता है इंडिया में? इसकी ट्रेनिंग मिलती है इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट? इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट। ये कहाँ पे है? सो दिस इज इन देहरादून एंड व्हेन वाज इट मेड? इट वाज मेड इन 1954 and the person who heads the Indian Naval Hydrographic Department is called the Chief Hydrographer. So let's keep this again कि एक ब्रांच है अप्लाइड साइंस की जो फिजिकल फीचर्स और मेजरमेंट्स के बारे में बात करती है, पढ़ाई करती है ऑफ सीज, ओशंस, राइट, एंड ऑल्सो द चेंजेस देयर। इन सब की पढ़ाई को लेके ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस, नॉट ओनली द इंडियन नेवी कैन यूज इट बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल शिपिंग, राइट? तो ये सब की ट्रेनिंग कहाँ पे प्रोवाइड होती है? देहरादून में। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट? इट इज कॉल्ड द इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट विच वॉज मेड व्हेन? इट वॉज मेड इन 1954. Now this department has a head. That guy who heads the department is called the chief hydrographer. And who has been appointed as the chief hydrographer? The name is Vice Admiral Lochan Singh Pathania. Is that all right? Great. Now the next one is also sort of similar to this. तो अब अगर हम लोग ये पूरी की पूरी हाइड्रोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास सर्वे वेसल्स होने चाहिए जो एज ए नेम से जो सर्वे कर सकते हैं, राइट? जो इसकी पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो इसी तरीके से एक INS संधायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो INS संधायक हैज़ बिन रीइनकारनेटेड, राइट? रीइनकारनेटेड का मतलब क्या है कि ये इंडियन नेवी का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल था, सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल था, and that was decommissioned in the year 2021 and now it has been reincarnated. You know, very similar to INS Vikrant, if you would have read about it. अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। पर ऐसा है कि जब हम INS विक्रांत की बात करते हैं तो वो बहुत पुराने ज़माने में हमने यूके से लिया था, फिर वो यूज़ किया 1971 की वॉर में और काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करने के बाद उसको डीकमीशन किया। फिर उसके बाद एक नई हमने बनाई शिप जो रीइनकारनेशन मानी जाती है, INS विक्रांत, वही उसका नाम लिखा था। In a very similar manner, so India's Navy's oldest hydrographic survey vessel called Sandhayak was decommissioned in the year 2021 and in the year 2024 it has rejoined the naval forces. It has been reincarnated. अब ये है क्या? दिस इज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स। तो कितने सर्वे वेसल्स बनने वाले? 4 में से सबसे पहला कौन सा है? INS संधायक। नाउ हु हैज वेयर इज इट बीन कंस्ट्रक्टेड? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, engineers, Kolkata. Very very simple and something that you should ideally keep in mind. The next thing is of course ये क्या करेगा? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा फॉर पोर्ट एंड हार्बर अप्रोचेस एज वेल एज नेविगेशनल चैनल्स एंड रूट्स, इस सब के ऊपर। पर ये कहाँ तक हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है? ना दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जमीन के ऊपर ऑन लैंड आई नो वेयर माई टेरिटरी एंड्स एंड समबडी एल्सेस टेरिटरी बिगिंस. But on water, you know, where is it written? Who follows it? Who has made these things? So this particular thing is known as UNCLOS, United Nations Convention on the Law of Seas. What is it called? United Nations Convention on the Law of Seas. ये क्या करता है? ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज को डिलिनेट करता है, ठीक है? तो इसने क्या बोला? इसने कहा सबसे पहली बात तो हम लोग अगर बात करें अपनी टेरिटरी के बारे में, राइट? अगर ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ तक ये मेरा देश है, तो इसके अंदर जो भी मेरा पानी है वो मेरा इनलैंड वाटर, दैट इज माय वाटर. आई विल टेक केयर ऑफ दैट वाटर. I will make rules and regulations with respect to it. I will tell the other country कि किसकी शिप आ सकती है, नहीं आ सकती, मेरे परमिशन के बिना नहीं हो सकती. अब जहां पे ये है मेरी कोस्ट लाइन, यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक. नाउ व्हाट इज अ नॉटिकल माइल? जैसे हम लोग जमीन के ऊपर किलोमीटर बोलते हैं, वैसे ही हम लोग पानी के ऊपर नॉटिकल माइल्स बोलते हैं. और हमारे क्लैट में, नॉट राइट नाउ बट एटलीस्ट बिफोर 2020, 3 times this question has been repeated कि भाई 1 nautical mile is equal to how many miles?
right? So 8 nautical mile is equal to how many miles? So this is a very very important question. This is 1.15, right? So ये आपने दिमाग में रखना है. This is very very important. Coming back to this, मेरी कोस्ट लाइन से लेके 12 nautical miles तक मेरी territory, my territorial water. If you want to enter, you will take my permission. It is my territory. But if there is some innocent passage of a ship, then I will see your intention. If it is bona fide, I'll give you maybe a warning and say, please don't come here again. But if it is malified, I can totally take up, whatever kind of steps that I deem fit, which is a proportional action, proportional reaction towards your action. ठीक है? उसके आगे मेरी कोस्ट लाइन से लेके 24 nautical miles तक. This is my contiguous zone. Now, what is this contiguous zone? So till 12 nautical miles तो मेरा टेरिटरी है, लेकिन बियॉन्ड दैट जो 12 nautical miles है, यहाँ पे मेरे लॉज लगेंगे, मेरे टैक्स लॉज लगेंगे. ठीक है जी. अगर हम कोस्ट लाइन से लेके 200 nautical miles तक की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है मेरा, एक्सक्लूसिवली मेरी इकोनॉमिक जोन, जिसमें से फर्स्ट 12 nautical miles आर माई टेरिटरी ऑल्सो. इट इज माई इकोनॉमिक जोन, इट इज ऑल्सो माई टेरिटरी. आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. बट इफ आई गो बियॉन्ड हियर, क्यों हम टैक्सेस ले रहे हैं? बिकॉज दिस इज माई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेयर आई विल एक्सक्लूसिवली make money out of it. So meaning make money in the sense I can do, deep sea mining for polymetallic nodules or something like that. तो ये मेरा exclusive economic zone है. ठीक है? और मेरी ये जो शेल्फ लाइन है यहाँ तक, राइट? सो 200 nautical miles से लेके 350, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, दिस इज माय कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो मेरा ये आईएनएस संधायक, ये तो बताओ कहाँ तक जा सकता है? तो इट कैन एक्सटेंड अप टू मैरिटाइम लिमिट्स, इट कैन कवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड इट कैन इवन एक्सटेंड अप टिल द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. So that is what INS Sandhayak is all about. That is what the United Nations Convention on the Law of Seas is all about. Now there is an announcement for all of you. From today onwards, what we are going to do is we have prepared a list of 10 MCQs, very very simple MCQs, and these MCQs are related to this entire video lecture that we have just done. What do you have to do and where will you get it? You will get it as a pinned comment down below as a link. You click on that link, and then this is free material for anyone, and you can go and you can assess your knowledge, right? So thank you very much. I will